Hello friends, welcome to All About tutorial. In this video we shall see that how to solve complex level puzzles. These puzzles are very important from the point of view of mains examination. By mains examination I mean that SBI PO means or IBPS PO or RRB PO. So I think that you all must know that all these exams get conducted twice. First they do their prelims and then they do their mains. So in mains examination you can definitely expect at least 75% questions from puzzles, and those puzzles are not very easy. They are tricky, they are time consuming, and you can only master them by practicing. So in this video I will discuss with you that what should be the proper strategy, how you should approach these puzzles, and I'll also solve an example with you guys. So RBI Grade B exam is approaching very soon, and you can definitely expect a set of 5 to 10 questions from complex level puzzles. So I'm just sharing a bit of information with you. So there are 60 questions that will be asked in RBI Grade B prelims. I'm talking about prelims. So there will be 60 questions, and you can definitely expect at least 40 to 45 questions from puzzles itself. And then all the questions will be from random topics. So I am not saying that all the 40 or 45 questions will be of tough level. There will be a mixture of easy level, moderate level and tough level as well. So you can expect 10 questions, that means 2 sets from tough level puzzle itself. For approaching complex level puzzles, or you can say high level puzzle, I would ask you that do not rush while solving these puzzles. Actually what happens if you talk about SBI PO prelims or IBPS PO prelims, so all these prelims exam are just of 1 hour and you have to solve 100 questions. So that is why the paper setter do not put that much tough level puzzles, but in mains level examination you have ample amount of time. If I talk about SBI PO mains, then you have 45 questions which you have to solve in 60 minutes. So you can see you are having more than 1 minute for each and every question. So in that kind of examination you can expect tough level puzzles. My next point is attempt after miscellaneous topics. As you all must know that there are miscellaneous topics like blood relationships, directions, or you can say data sufficiency, input output. So try to solve these miscellaneous questions first and then go for puzzles, because puzzle ultimately will take a lot of time. Okay, so the next thing is marking scheme, and I think that you all must know by now that it is +1 and -0.25 for per question. But if you talk about SBI PO mains, then there will be 45 questions. Those questions would be of 60 marks. So in this exam there is slightly deviated marking scheme. You can expect a question to be of 1 mark, 1.33 mark or 1.5 mark for that matter. Similarly, the negative marking would also be proportionate to the positive marks which you are getting for every question. Now talking about the pattern of these puzzles. So a mixture of 2 to 3 kinds of puzzles is there. What is that? I've explained it in the next point itself. Combination of scheduling, sitting arrangement, ages and different variables. So how a puzzle is actually made. The paper setter has this thing in mind that he or she has to put a lot of variables while he is making a complex level puzzle. So definitely in complex level puzzles you can expect that there would be 3 variables for sure. So my next point is very cliche, very common, and you all must have heard from a lot of people that practice is the key to master this topic. Not only this topic, but the whole reasoning is just about practice. The more you will practice, the better you will be in these questions. So this is the basic information which I wanted to share with you about complex level puzzles, and now I'm going to share with you some important tips for this section. Okay, so students, as you can see that I have jotted down few important tips and I'm going to discuss these tips with you one by one. So the first point is read the question twice. Why I have written this word is because in these kind of questions I am talking about tough level puzzles. The amount of data which is involved, or you can say there is a lot of information. There will be for sure 3 variables. There will be lot of conditions. Some conditions would be in positive, some conditions would be in negative, and some conditions would be ambiguous. So all in all, the amount of data would be so much. So you have to be very careful while reading these questions. From clues, I mean that there would be some direct clues as well as some indirect clues. And if you want to solve these questions in a particular manner, then what you have to do is you have to follow the direct clues first and then you have to go for the indirect clues. The next step is make grid, chart
table as required. So as soon as you see that this question is of a certain type, for suppose the question which you are solving is a floor based puzzle, so what you have to do, as soon as you see the question, you have to draw the floors like 1, 2, 3, etc. If you see the question is of a circular arrangement, so you have to quickly make a circle and then start solving your question. These are actually very small tips, but अगर इन tips से आपका 1 या 2 सेकंड भी बच रहा है, then they are actually important for you. My next point is always start with positive statement which can give you a definite position at least of 1 to 2 people in your question. So after positive statements you have to go for ambiguous ones. By ambiguous statements I mean that there would be certain statements that either A likes coffee or tea. And at last you have to go for the negative statements. Generally हमें negative statements इसलिए दिए जाते हैं कि last में क्या होता है, जब आप पूरा question solve कर चुके होते हो then there are certain places which remain unfilled. तो उनको fill करने के लिए the negative statement is given to you. Next point is consider two cases always if possibilities are there. Okay, so while you are solving your floor based puzzle or circular puzzle, so what happens generally is कि वो आपको इस तरीके की conditions देते हैं कि आपको एक से ज़्यादा possible cases बनाने पड़ते हैं. The next step is check if the same word is repeated more than once. So it is very important tip and I would mark a star here because it says कि अगर कोई एक particular word एक puzzle में एक से ज़्यादा बार repeat हुआ है then definitely there is a hidden clue behind it. So make sure कि अगर आप कोई ऐसी puzzle कर रहे हो जिसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, you don't know that how to proceed in a particular manner, then what you have to do is you have to check for the same word that if the word which has already appeared in the question has appeared more than once or not. ये एक ऐसी tip है which will definitely help you in solving your question. So these are the tips that I wanted to share with you and now I am going to apply these tips on a question. Okay, so students, this is the question that I want to discuss with you and without further ado, let's get started. 6 coaches named A, B, C, D, E and F host events on 6 days of the week from Monday to Sunday. There is no event on Wednesday. Their ages are 37, 38, 40, 41, 45 and 46. They coach different teams: West India, Sri Lanka, West Indies, Australia, England and Bangladesh. So students, this is the core or you can say the basic information of the question. इस information में हमें ये दिया गया है कि there are 6 people in our question as you can see here. Now it has been said that these people actually host event on 6 different days of the week. So you all must know that there are 7 days in a week from Monday to Sunday, but we just have 6 people. And it has also been said in the question that on Wednesday there is no event. Then we have been given the ages of 6 people. And in the next line it says that these people actually coach different teams and we have been given names of 6 different countries. So इस question में आप देख सकते हो सबसे पहले we have 6 people, then we have 6 days, then we have ages of 6 people and then we have the country to which they actually coach. So इस question में we have 4 variables. So इस type of question you can definitely expect in your mains examination. One very important tip I want to share with you कि जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले जिनमें आपको वीक डेज दिए हों या मंथ्स दिए हों, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ कांस्टेंट लेनी पड़ती है, यानी कि देयर इज़ वन वेरिएबल विच विल रिमेन कांस्टेंट एंड रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स विल गेट एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू दैट कांस्टेंट. सो इस क्वेश्चन में मैंने जो चीज़ कांस्टेंट ली है वो है वीक डेज. सिमिलरली अगर यहाँ पे मंथ्स दिए होते तो आप मंथ्स को कांस्टेंट रखते. अगर आप इसमें ए बी सी डी ई एंड एफ को कांस्टेंट रखोगे तब भी आपका आंसर आएगा, बट दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वाज द टिप एंड नाउ आई विल रीड द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. द कोच ऑफ इंग्लैंड होस्ट द इवेंट ऑन संडे. ओके, सो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आप अपने चार्ट में डायरेक्टली यूज कर सकते हो. सो द कोच ऑफ इंग्लैंड विल होस्ट द इवेंट ऑन संडे. सो आई एम राइटिंग इट आउट हियर. The next line says he is neither the oldest nor the youngest. इसका मतलब ये है कि ना ही तो वो 37 years का होगा और ना ही वो 46 years का होगा. The next line says the Bangladesh coach hosts just before the West Indies coach. What does this mean? This means कि ये वाला जो चार्ट है इसमें बांग्लादेश will come first और उसके immediately बाद में आएगा West Indies. We'll put Bangladesh and then immediately after that we'll put West Indies. Okay, so let's read another statement. The coach whose age is 38
होस्ट ईदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे। सो स्टूडेंट, अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन टिप्स कि कुछ होते हैं एम्बिगुअस स्टेटमेंट। वन थिंग इज फॉर श्योर कि इस तरीके के जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के बाद में आएंगे। सो एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट यूज दिस स्टेटमेंट, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि जो 38 ईयर्स का है ईदर ही विल सिट हेयर और हेयर। सो आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट वेगली कि इन दोनों में से कोई होगा 38 ईयर्स का। Now the next statement says F is the oldest among all and he hosts on Saturday. Okay, so this is a very important statement which we can put directly into our chart. इसमें हमसे ये कहा गया है कि F is the oldest. So oldest का means क्या होगा कि F की एज है 46 years old and he hosts on Saturday. So in this column I can write that coach is F and he is 46-year-old. So students, you can see that I am just putting all the direct statements into the box. I am writing the indirect statements down below, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे बांग्लादेश को किसी भी रैंडम कॉलम में पुट कर दूंगी देन डेफिनेटली बहुत सारे केसेस बन जाएंगे और आप जितने ज़्यादा केसेस लोगे उतना ही कन्फ्यूजन होगा। सो आप कोशिश करो कि आप केसेस को अवॉइड करो। ओके, सो वेडनेसडे में आई एम जस्ट पुटिंग अ लाइन बिकॉज इसमें कोई भी इवेंट नहीं हो रहा है। Next line says 3 coaches host between D and F. So again students, हमें एक ऐसा statement दिया है which we can directly put into our box, क्योंकि हमें ये पता है कि F कब होस्ट करता है, सैटरडे को, and it says कि 3 कोच हैं जो कि D और F के बीच में होस्ट करते हैं। So here our first coach will come, here second, वेडनेसडे को कोई इवेंट नहीं हो रहा है सो उसमें कोई भी कोच होस्ट नहीं करेगा। सो थर्ड होगा यहाँ पे जो ट्यूसडे को आएगा। सो आई कैन से that D is the one who hosts on Monday. The next line says the coach of Australia hosts after the coach of Bangladesh. So हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का इवेंट बांग्लादेश के इवेंट के बाद होता है। I have already written here Bangladesh, so I am just writing Australia here. The next line says E is the coach of Sri Lanka. He is 41 and host on Friday. So students, you can see that हमें एक और direct statement मिल गया है which I can directly put into my box. So I am writing here E and he is 41 years old and he host on Friday. So I am writing here Sri Lanka. The next line says C is the coach of Australia. So अब हमें ये पता चल गया है कि C है वो ऑस्ट्रेलिया का कोच है, but we do not know कि ये कब होस्ट करता है। Now the next line says E host before A, यानी कि जो E है वो A से पहले होस्ट करता है। So students, you can see कि हमें पता है कि E फ्राइडे को होस्ट करता है, उसके बाद सैटरडे को there is F. So A के पास सिर्फ एक ही प्लेस है and that is on Sunday. So I am writing it out here. I am writing here कि यहाँ पे जो भी बैठेगा he is not of 37. ओके सो स्टूडेंट, कमिंग बैक टू द कंडीशन, हमारे पास एक ये कंडीशन थी कि बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज़ इन दोनों के जो कोच हैं वो साथ में इवेंट होस्ट करते हैं, यानी कि इमीडिएट, यानी कि दे होस्ट द इवेंट ऑन इमीडिएट डेज। सो आप यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसी प्लेस है जहाँ पे इमीडिएट लोग बैठ सकें एंड दिस इज़ दिस वन। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर हम बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ को साथ में बिठा सकें। सो बांग्लादेश का जो कोच होगा वो इवेंट होस्ट करेगा ऑन मंडे और जो वेस्ट इंडीज़ का कोच होगा वो इवेंट को होस्ट करेगा ऑन ट्यूसडे। ओके सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव अनदर स्टेटमेंट राइट हियर, सी इज़ द कोच ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच आई हैव ऑलरेडी रिटन। हमसे एक लाइन ये कही गई थी कि द कोच ऑफ ऑस्ट्रेलिया होस्ट द इवेंट आफ्टर बांग्लादेश। So in this whole table we can see that there is only one place where C and Australia can sit together and that place is on Thursday. अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि हमारे पास there were total 6 coach and 6 countries. So 6 countries में से 5 countries have already been placed और जो country अभी place नहीं की गई है that is India. So I can say the coach of India hosts the event on Saturday. So now students, you can see हमें ये पता चल गया है कि कौन सा कोच कब इवेंट होस्ट करता है और वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, और अब हमारे पास सिर्फ उनकी एजेस को डिटरमाइन करना बचा हुआ है। सो आई एम रीडिंग माई नेक्स्ट स्टेटमेंट विच सेज द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ D and A is equal to the difference in the ages of E and B. So this is a tricky statement. We are going to read it once again. The difference in the ages of D and A.
सो लेट्स लोकेट देम हेयर इन द टेबल. डी है ये और ए है ये वाला. इट सेज कि जितना डिफरेंस डी और ए की एज में है उतना ही डिफरेंस इज इन द एजेस ऑफ ई एंड बी. सो आई एम राइटिंग इट. सो स्टूडेंट्स, आप ये चीज़ देख सकते हो, हमें ये नहीं बताया गया है कि डी बड़ा है या ए बड़ा है या फिर ई और बी में से कौन बड़ा है. सो अगर हमारे आंसर्स माइनस में आते हैं सो हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि बी बड़ा है, और अगर हमारा आंसर प्लस में आता है दैट मीन्स ई बड़ा है. आपने देखा होगा कि हमारे पास देयर वर 6 एजेस. आउट ऑफ दीज 6 एजेस 41 एंड 46 हैव ऑलरेडी बीन ऑक्यूपाइड. अब हमारे पास देयर आर 4 एजेस 37, 38, 40 and 45. So I'm writing these ages here. हमें ये पता है कि E is of 41 years old. So I'm writing it here. E is 41. और हमें ये चीज़ पता है कि या तो D और या फिर B इन दोनों में से कोई एक 38 years का है, प्लस A 37 का नहीं है. अगर हम यहाँ पे सोचें कि B 45 years का है दैट मीन्स E और B में 4 years का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पर भी 4 years का डिफरेंस क्रिएट करना होगा. अगर B 45 का हुआ देन डेफिनेटली D 38 का होगा. और अगर हम ये लेट करते हैं कि D 38 years का है दैट मीन्स A को या तो उससे 4 साल बड़ा होना पड़ेगा या फिर 4 साल छोटा होना पड़ेगा. अगर A उससे 4 साल छोटा होता है दैट मीन्स कि A शुड बी ईदर 34 और A शुड बी ईदर 42. यहाँ पर हम देख सकते हैं ना ही 34 और ना ही 42 हमारे ऑप्शंस में है. दैट मीन्स जो B है वो 45 years का नहीं हो सकता. नाउ लेट्स ट्राई फॉर 40. अगर B 40 years का हुआ दैट मीन्स E और B की एज में 1 year का डिफरेंस है, तो हमें 1 year का डिफरेंस यहाँ पर भी क्रिएट करना होगा. अगर B 40 का है दैट मीन्स D 38 का है. अगर D 38 का होता है तो या तो A को 37 का होना पड़ेगा या फिर 39 का होना पड़ेगा. 39 इज़ नॉट गिवन टू अस, और यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में क्लियरली दिया गया है कि A 37 का नहीं हो सकता, विच मीन्स कि B 45 का भी नहीं होगा. नाउ आई एम ट्राइंग फॉर 38. अगर B 38 years का होता है दैट मीन्स द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ E एंड B इज़ 3 years. तो हमें यहाँ पर भी एक 3 का डिफरेंस क्रिएट करना होगा. तो हम ये लेट कर लेते हैं कि B इज़ 38 years old, और अब हमें इन दोनों की एजेस में 3 year का डिफरेंस क्रिएट करना है. तो आप देख सकते हो अगर इन दोनों में से कोई एक 37 का होता है और एक 40 का होता है तो हम 3 years का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. सो वी कैन सी द ओनली कॉम्बिनेशन विच एग्जिस्ट हेयर इज 37 एंड 40. इसका मतलब जो B है ही इज 38 years old इज इक्वल टू D माइनस A. हमें ये पता है कि D और A में से एक है 37 का और दूसरा है 40 का. हमारी जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है वो ये कहती है कि A 37 का नहीं हो सकता, विच मीन्स D इज़ 37 एंड A इज़ 40. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमसे यहाँ ये नहीं कहा गया है कि D बड़ा है या A बड़ा है, और अगर आपका साइन माइनस में आता है दैट मीन्स A इज़ ओल्डर देन D. सो आई एम पुटिंग द एजेस ऑफ द कोचेस इन their respective boxes. E is 41 years old, B is 38 years old. Similarly, D is 37 years old and A is 40 years old. अब आप देख सकते हो हमें 5 लोगों की एज पता है, सो हमारे पास सिर्फ एक बॉक्स ऐसा है जहाँ पे हमने एज नहीं लिखी है. दैट मीन्स C is 45 years old. सो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो. व्हाट आई हैव डन इन दिस क्वेश्चन इज, जो भी मेरे पास डायरेक्ट स्टेटमेंट थे, जैसे कि मुझसे ये कहा गया था कि इंग्लैंड का जो कोच है ही होस्ट द इवेंट ऑन संडे, या हमें ये दिया गया था कि ई इज़ द कोच ऑफ श्रीलंका, ही इज़ 41 एंड ही होस्ट द इवेंट ऑन फ्राइडे. सो ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो हमें डायरेक्टली दिए गए थे. सो हमने क्या किया, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स को अपने बॉक्सेस में पुट कर दिया. देन हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट स्टेटमेंट थे जो कि एम्बिगुअस थे नेचर में. उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें एजेस डायरेक्टली नहीं दी गई थी, बट वी हैव टू डिटरमाइन दी एजेस. तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ किया. सो द ओनली टिप विच आई वुड लाइक टू गिव यू कि जब भी आपके पास ज़्यादा डेटा हो, आपके क्वेश्चन में ज़्यादा वेरिएबल्स हो, सो यू नीड नॉट टू बी पैनिक, बिकॉज हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है. अगर आप बिना पैनिक करे सॉल्व करोगे देन डेफिनेटली आपका आंसर आएगा, भले ही आपको उसमें टाइम ज़्यादा लगे.
Okay, so students, this is it for today. I hope you like this video and you understand the concept behind these kind of questions. We'll get back to you with another video. Till then, stay tuned, take care, all the best, and keep practicing hard. Bye.